Hello everyone. So we are back again with another live session. जैसे कि हम लोग हर वीक करते हैं कि हम लोग एक वीकली लाइव सेशन करते हैं जहाँ पे आपको इस वीक के जो भी न्यूज़ अपडेट्स है और मार्केट्स किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है उसके बारे में आपको अपडेट्स देते हैं। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस हो या किसी चीज़ों के बारे में जानना हो तो हम लोग उसका भी आंसर करेंगे इस लाइव सेशन के थ्रू। तो अगर आप लोग हमें लिंक्डइन, यूट्यूब या ट्विटर कहीं से भी देख रहे हैं तो मेक श्योर कि आप फॉलो करिए हमारे चैनल को या अपने प्रोफाइल को, ताकि आपको ऐसे लाइव सेशंस जैसे भी हम लोग हर वीक कर रहे हैं तो उसका अपडेट्स मिलता रहे। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस हो इन बिटवीन, आज जब ये लाइव सेशन चल रहा है तो आप ये क्वेश्चंस अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो एंड विल टेक इट अप। और अगर आपको बाद में भी कोई क्वेश्चंस हो आप अपना टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, जहाँ पे हम लोग आपके क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। तो विदाउट फर्दर अडू हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे लाइव सेशन को और शुरू करते हैं, जानते हैं इस वीक के न्यूज़ के झोली में क्या-क्या है, फाइनेंस का क्या हाल है और दूसरे एक्सचेंजेस में क्या हो रहे हैं और कहाँ पे कौन-सा हैकर ने हैक कर लिया है या चोरी किया है। हाँ, क्रिश। आई थिंक क्रिश इज़ फ्रोज़न। Krish is हेलो, हेलो। stuck. क्रिश आज बोल रहे हैं कि आज मैं न्यूज़ के पहले ही Hello. फ्रोज़ हूँ। हाँ तो sorry for the delay. I think there is some internet error on my end. तो anyways, let's begin. तो Binance का नाम सैम ने पहले लिया था, तो let's start with the news with Binance. So it's not a news with Binance. तो Binance ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपने ब्रांड एम्बेसडर के हिसाब से यूज किया था, जैसे बिटगेट ने मेसी को यूज किया है। तो since Binance is in trouble, so now एक people class action lawsuit फाइल किया गया है रोनाल्डो के ऊपर। So basically any amount that he has made about promoting Binance that might be clawed back. तो लोग इस lawsuit के through that amount might be taken back from him. So we will see how it goes, because if that happens then FTX के जो भी promoters थे, जैसे Shaquille O'Neal, Tom Brady, Mr. Wonderful, all these people had got money from FTX promotion, तो उनके भी पैसे return लिए जा सकते हैं from the US courts. So this will be like a precedent for any future actions. So that's the news about Binance, and और I think CZ ने भी resign कर दिया है and he has given over his voting rights. So with this, effectively he loses control on day-to-day activity over Binance. तो अभी 2-3 महीने में बहुत चीज़ों को देखने को मिलेंगे. CZ is going to jail or not? Will he be able to go out of US or not? तो बहुत सारे ऐसे न्यूज़ है जो कि अभी आएंगे. But overall market condition is improving, as you can see, and all these will now turn to two things. एक तो होगा कि centralized exchanges के ऊपर या फिर centralized agencies will go after centralized companies for frauds and back taxes, etc etc. और दूसरा होगा कि decentralized spaces में बहुत सारे नए इन्वेस्टमेंट आते रहेंगे, या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस या डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल्स या डिसेंट्रलाइज मैसेजिंग companies etc will raise a lot of funds because of regulatory concerns, which we will also see later part of the news, but this is my prediction. So yeah, I think as I was saying, तो दूसरा न्यूज़ वही है, फिलिपिनो रेगुलेटर्स ने बाइनेंस से कहा है कि यू आर ऑपरेटिंग विदाउट अ लाइसेंस इन फिलीपींस, so you should immediately cease trading or face up to 21 years of imprisonment. तो ये imprisonment किसको करेंगे पता नहीं, but like they have said कि 21 years of imprisonment. So now all these cases will add up against CZ. अब इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो वो भी इसके पीछे जा सकते हैं, वो कह सकते हैं कि ऑल द P2P is happening are through Binance and you are not regulated, neither do you have a regulated partner, क्योंकि WZDX के साथ उनका पार्टनरशिप ऑलमोस्ट डेड हो गया है. So this will actually make Binance think twice before going to other countries. तो यही
मेरे को लगता है कि आगे सिलसिला चलता रहेगा इसी तरीके से. Sam, besides these, do you have any prediction following Binance's, back foot defense? मैं तो यही कहूँगा. Like, let's talk in terms of cricket, क्योंकि लोगों को समझ में आता है, क्योंकि अभी काफी बाउंसर्स के बाद now they have gone on and given a short ball which he cannot play anywhere, so he has to go for a back foot defense. तो आपको क्या लगता है क्या होने वाला है आगे? आगे तो मुझे ऐसा लगता है कि if you are talking about Binance ने अभी और जो नया सीईओ है, they have given some statements जहाँ पे उन्होंने बोला है कि what will be the plans going forward and all. But on the centralized side, I think Binance will be going, as you said, on the back foot, जहाँ पे वो कोशिश करेंगे कहीं अपना regulated license लेने का. वरना I think they are moving again back to the decentralized thing जो अब पहले भी बात की हम लोग, कि जहाँ पे they will say like will not deal with directly on and off ramps. We can only do crypto to crypto because जैसे That कि is मैं लास्ट बार में बोला, हाँ, क्योंकि दैट इज प्रीटी सेफ, क्योंकि अगर आप क्रिप्टो टू क्रिप्टो करते हो एंड यू आर नॉट वर्किंग विद एनी ऑन एंड ऑफ रैम्स, you are essentially allowing people crypto to trade, right? And you do not have on and off ramps, you do not have P2Ps, so people are putting in their crypto in your platform, no matter from where. So you are not responsible about the jurisdictional thing, you are only responsible for telling how much profit you are making and paying your profit taxes. But that will again, like 2-3 साल 4 साल 5 साल तक मैक्सिमम तक ये जाएगा, उसके बाद you still have to follow the regulation. So this is what's going to happen. And आगे चल के और भी बहुत कुछ हो सकता है, but let's keep that for the later. तो अभी स्पेनिश गवर्नमेंट ने भी यही कहा है कि नाउ यू हैव टू डिक्लेयर क्रिप्टो होल्डिंग्स, जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था कि इफ यू हैव क्रिप्टो होल्डिंग्स यू हैव टू डिक्लेयर. स्पेनिश गवर्नमेंट ने भी वही कहा है कि इफ यू हैव मोर देन 50,000 यूरोज इन क्रिप्टो एसेट यू हैव टू डिक्लेयर देयर फॉरेन होल्डिंग्स, लाइक कहाँ पे आपका है या फिर कितना है, एटसेट्रा एटसेट्रा. This is already applicable in India. This is kind of applicable in Taiwan. Singapore में already applicable है. Spain में applicable हो गया है. US में applicable है. So if you are not saying it, it means you are avoiding your tax liabilities basically. And एक बार स्पेन में ये लॉ आ गया है तो मतलब throughout European Union this law will come within the next 1 or 2 years, because European Union में more or less people follow similar kind of reporting and similar kind of laws. Yeah, so Hong Kong launches a probe about who next. So suddenly you will feel कि law agencies will become very active. First of all, क्योंकि the big fish is in the net, but the big fish is already suffering, and now they have chances to go after the smaller fish. But on a more serious note, क्या आपको पता है कि बाइनेंस के भी बहुत सारे इंटरेस्ट है बहुत सारे अदर एक्सचेंजेस पे जो बाइनेंस डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता है, बट बाइनेंस हैज डीप इंटरेस्ट इन देम. सो वजीरेक्स वन ऑफ द एग्जांपल जो बाइनेंस ने काफी जोर शोर से प्रमोट भी किया था कि दे हैव अक्वायर्ड द वजीरेक्सेस user base and license and everything except the INR to crypto part. So besides that, they also have other interest in other exchanges and other wallets. So Trust Wallet is one of them, but besides that, there are many others. So do you know any of these cases before, or have you heard of any of them, Sam, Shovik? Or would you be surprised कि आपको पता चले कि कल आप जो exchange में trade करते हो Binance has a majority stake? हो ही सकता है, इतना बड़ा प्लेयर है कहीं पे भी अपना इन्वेस्टमेंट हो सकता है ना. स्टेक होल्डर कोई भी एक्सचेंज का हो सकता है, बट ये डेफिनेटली वो पब्लिक डोमेन में आके डिस्क्लोज तो नहीं होने वाला है. तो कुछ इंटरनल रिसोर्स के थ्रू लोगों को पता था कि Binance has a controlling stake and Binance is actually owning it. Trust Wallet के बारे में भी बहुतों को पता है कि Binance owns Trust Wallet. Binance Swap जो कि Binance chain के ऊपर है, it's almost owned by Binance. Venus बोल के एक exchange है, they also have sold out to Binance like majority stake.
तो बहुत सारे ऐसे डेक्स एंड सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है, वॉलेट्स है जो कि बाइनेंस ओन करता है डायरेक्टली और थ्रू प्रॉक्सी. सो आई थिंक आगे ये होने वाला है कि बाइनेंस ब्रांड जो है दैट विल सफर बिकॉज पीपल विल गो आफ्टर देम. बट यू नो गलती से ही सही, but people might actually move on to other places which are also controlled or under the ownership of Binance. So it's very important for users to verify ki, like who exactly are people behind this exchange and what do they stand for. I think that will be hard enough, like because all the investments that they have made may not be public, and we all only know कि जैसे आपने बताया ट्रस्ट वॉलेट, कॉइनटेलीग्राफ, ऐसे कुछ ब्रांड्स जो बहुत बड़े हैं. So we know that okay, this has been acquired by Binance or has a majority Coin stake or market some cap. stake. Yeah. So like उसके अलावा हमें नहीं पता. Still now like Binance Lab is into investing into various different projects. So हम लोग को नहीं पता है कि कहाँ पे Binance has already invested before. Investment is something else. Investment आप कहीं पे भी कर सकते हो, but that does not give you controlling stake or that does not give you proxy control over the whole thing. But moving forward, I think this will be very important for people क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो, so you will be in problem like अभी जो Poloniex, HTX, Heco, Hubi, all these are suffering. Maybe Tron also, क्योंकि apparently Justin Sun is saying कि all these exchanges are getting hacked, and that's like one after the other. So I don't think this is a hack. First of all, I think it's more like insider activity. Time will tell what is it, but that's my gut feeling. And this is being basically done so that before any kind of class action lawsuit, any kind of issues, he has enough liquidity to fight against. And similar things you will see with other exchanges as well. So basically, अगर आप सोचते हो कि अगर Binance fall करता है, it's not just Binance which is going down. If Binance goes down, a lot of other similar exchanges will go down. बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जो डायरेक्टली बाइनेंस से लिक्विडिटी पुल करते हैं, those will go down. बहुत सारे ऐसे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है, डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स है जो कॉइन मार्केट कैप से डेटा फीड लेते हैं along with chain link. So all these things will go down. So that's going to be a very big effect. But honestly, I don't think that's going to happen. But that's like the Armageddon that might happen. So always prepare for the worst. It's like it's too big to... मुझे कहावत याद आ गया, हम तो डूबेंगे साथ में तुमको लेके डूबेंगे. करेक्ट, बट साथ में लेके डूबेंगे तो बहुत ज्यादा डूब जाएंगे. दैट इज द थिंग, लाइक इट्स टू बिग टू बी फेलिंग. अगर आप सोचते हो कि देखिए दो एक्सिस है. एक है कि कंपनीज व्हिच हैव ओरिजिनेटेड इन ईस्ट एशिया, कंपनीज व्हिच हैव ओरिजिनेटेड ऑन द वेस्ट. तो अगर ईस्ट एशियन कंपनीज आप देखते हो तो दीज आर ऑल हुबी, ओकेएक्स, बाइनेंस, गेट.io एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वेस्ट एशिया आप देखते हो तो दोज आर लाइक कॉइनबेस, क्रैकन, all these etc. So there are many others. Abhi Singapore is one region which is kind of regulated, so you can consider them as an upgraded version of West Asia, I mean East Asia, but not as close to the West. So my suggestion would be again diversify. एक ही जगह, एक ही exchange, एक ही wallet पे ना रख के have it on multiple places, so that even if something goes down, you are not back to zero. So yeah, OKX launches crypto exchange wallet services in Brazil. Why Brazil? क्योंकि ब्राजील में laws and regulations जो है क्रिप्टो को लेके काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, and lot of regulated companies are also there. ब्राजील का खुद का एक स्टेबल कॉइन है against Brazilian real, which is widely used and people have local remittance license. So वो Brazilian stable coin, you can use it for payments as well. So I think that is one of the reasons OKX is targeting Brazil. The second most important reason I think why they are targeting Brazil, क्योंकि Brazil का जो stable coin था that was very popular in FTX. I think it was like the highest volume amongst all the other non-USD stable coins. तो इसीलिए to cater to those people, OKX is launching a crypto exchange and wallet in Brazil. So crypto exchange, obviously, they are going to support Brazilian real on and off ramps, etc. And wallet services so that
once you have traded, you can move it to your OKX wallet. So ideally what these people are trying to do is they want you to make a habit ताकि आप नॉन कस्टोडियल वॉलेट यूज करके स्टोर कर सको अपना क्रिप्टो, बट यू स्टिल ट्रेड ऑन अ कस्टोडियल एक्सचेंज. So that's where everything is headed. So we have been talking about this, I think, for the past 4, 5, 6 months, if not 6, 4 months definitely. And this is where we are seeing. And जितना जितना दिन जाता रहेगा आगे, उतना आपको ये चीज देखने को मिलेगा कि keep a wallet in decentralized and non-custodial space, but when you trade with centralized liquidity. So whenever you want to trade, you have to pass the KYC, but after trading, you can withdraw the crypto out. So that's going to happen. So being a trader and being an investor, Shovik and Sam, do you think you will use such wallets again for trading on exchanges, or आप directly उतना ही सिर्फ exchange पे रखोगे जितना आप trade करना चाहते हो? डेफिनेटली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से जितना मैं ट्रेड करना चाहता हूँ उतना उस टाइम पॉइंट पे रखता हूँ. उसके बाद जो है बाकी सब डिसेंट्रलाइज्ड जो है एक्सचेंज में डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में मूव करना ही सही रहेगा, क्योंकि एक्सचेंज में कुछ भी हो सकता है बिकॉज दे हैव द एंटायर कंट्रोल ओवर द कॉइन्स, राइट. तो एनी टाइम जो है वो सर्वर डाउन हो सकता है, या फिर एक इशू हम लोग ने बहुत पहले डिस्कस किया था कि स्प्रेड जो है वो डिफरेंट होता है. कभी कभी ये भी हो सकता है कि ऑर्डर वहाँ पे हिट ना हो और कुछ अलग ही प्राइस आपको बिड आस्क में दिखाया जाए. प्राइस मैनिपुलेशन तो काफी ज्यादा होता है, तो ये सब चीज को थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए मैं मेजॉरिटी चीज तो वहाँ पे रखना नहीं पसंद करूंगा. What about you, Sam? I think similar, क्योंकि अभी जैसे बहुत बार हम लोग देखे लास्ट टाइम पे हम लोग जब फाइनेंस का न्यूज कवर कर रहे थे, had a talk कि हम लोग प्रूफ ऑफ रिजर्व्स देख सकते हैं बट प्रूफ ऑफ लायबिलिटी नहीं देख सकते कि एक्सचेंज के ऊपर क्या है. सो इफ देयर इज अ सेपरेट वॉलेट, एंड आई सी दिस कमिंग बिकॉज अभी सब लोग यही कर रहे हैं. इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, Coin26 इज लॉन्चिंग ऑक्टो. अभी बाइनेंस ने खुद अपना एक वेब3 अलग वॉलेट बना दिया है ऑन द ऐप ऑन इटसेल्फ, and OKX and other exchanges are also coming up with a separate wallet. जहाँ पे I think this will be like an integrated product with the exchange only at some point, जहाँ पे they will say like, okay, if you want to withdraw it to our wallet and use it on a decentralized way. So in that way I think वो, और ये सब चीजों के अलावा भी एक और फायदा है कि you can see your coins on the on chain. आपको एक्सचेंज में क्योंकि पता नहीं चलता है कि if the coins are been used or you are been traded against, जो क्रिश बहुत बार बोलते हैं. So if you have it in your wallet, you are safe that okay, nobody is trading against you and using your assets. It's not been Using your asset. anywhere. So you can verify it on chain that okay, we have it on the wallet. So I think that's the future going forward. अभी बहुत सारे ऐसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ डीफाई ETFs आ रहे हैं या डीफाई कॉइन बास्केट्स आ रहे हैं. जैसे सेंट्रलाइज्ड कॉइन बास्केट्स तो है, जैसे मुद्रिक्स है, कॉइन बास्केट बोल के एक कंपनी है. दे प्रोवाइड सेंट्रलाइज्ड सेट ऑफ कॉइन्स जहाँ पे आप पैसे डाल के यू कैन बाय अ सेट ऑफ कॉइन्स लाइक लेयर 2 कॉइन्स, गेमिंग कॉइन्स, एक्सचेंज कॉइन्स, लेयर 1 कॉइन्स एटसेट्रा. बट ऐसे बहुत सारे अभी आ रहे हैं जो कि they're not centralized, they're decentralized. So you deposit USDT and you buy those coin sets. So at the end of the day, आपको क्या लगता है कि coin sets का जो concept है, which is more like ETF or mutual funds, like a liquid version of mutual funds on chain. So do you prefer to buy coins, like being somebody in the crypto space for 2 years, do you prefer to buy coins, let's say for DCA, या फिर SIP method using a certain set of coins, or आपको you still prefer to buy them directly based on your better judgment? So and if you like feel, actually and if you feel so, please give a reason, क्योंकि मैं reason जानने में काफी interested हूँ, क्योंकि मेरा खुद का भी एक point of view है, and I would like to know your reasons before I tell about mine. Yeah, Shavik. So shall I go first or Yeah. Okay. तो मेरे हिसाब से मेरा एक्चुअली करंट सिनेरियो के हिसाब से मेरा ये मानना है कि
इस प्राइस पॉइंट पे या फिर इस कंडीशन में ना एसआईपी करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि क्रिप्टो में होता क्या है, यहाँ पे बियर साइकिल, बुल साइकिल, ये सब चीज आता है। तो बियर साइकिल जब चल रहा है, तब बियर साइकिल का मतलब बीच में जब प्राइस स्टेबलाइज ऑलरेडी हो चुका है, तब से अगर आप एसआईपी करना स्टार्ट कर रहे हो, दैट इज गुड, बट नॉट एट द एंड ऑफ द बियर साइकिल। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आप ऊपर वाला प्राइस पॉइंट में भी आप बाय करते जाओगे। वहां पे आपके पास दो ही ऑप्शन है, एक तो एक आपस थ्रेशोल्ड लिमिट सेट कर लो कि इतना प्राइस के अंदर ही मुझे बाय करना है, और उसी के बीच में या तो ऑल इन हो जाओ, नहीं तो फिर वही है कि एसआईपी में तो उस टाइम पे मत करो, क्योंकि बुल साइकिल जब होता है ना, तो अपर प्राइस पॉइंट पे जाके बाय करने का कोई पॉइंट मतलब नहीं बनता है। ये हो गया एक चीज। और मैं इसलिए कहूंगा कि एसआईपी मेथड में तो एटलीस्ट इस करंट सिनेरियो में या फिर इस प्राइस पॉइंट पे आके सही पॉइंट नहीं रहेगा। ये कब होता है, अगर आप 2022 में स्टार्ट कर रहे हो तब सही था, बट अभी नहीं। 2022 के एंड में, 2022 के बीच में ये भी सही रहता, लेकिन अभी नहीं कि 23 का एंड में आके अब ऐसा स्टार्ट कर रहे हो, तो फिर उतना सेंसिबल नहीं होता है ये डिसीजन। तो ये तो हो सैम, गया आपको पहला क्या मानना है? चीज। दूसरा चीज है कि विल यू डू इट, लाइक इफ यू आर स्टिल डूइंग एसआईपी, लेट्स से यू डोंट नो एनीथिंग, तो आप सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के थ्रू जाके करोगे, या फिर यू वांट टू रिलाई ऑन अ डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म? जैसे अभी बहुत सारे हैं, इंडिया में भी बिटसेफ बोल के एक आया है जो कि अलाउज यू टू बाय द ब्लूमबर्ग कॉइन सेट। तो ब्लूमबर्ग ने खुद डिजाइन किया है कॉइन सेट, एंड यू कैन जस्ट बाय यूजिंग यूएसडीटी। तो डू यू एक्चुअली थिंक यू गो फॉर यहाँ इट? पे यहाँ पे दो सिनेरियो है, ठीक। यहाँ पे दो सिनेरियो है, एक है नोविस ट्रेडर के लिए या फिर नोविस इन्वेस्टर, जो लोग क्रिप्टो मार्केट में पहले पहले आ रहे हैं, उन लोग को उतना पता नहीं है। और दूसरा है जो ऑलरेडी मार्केट में काफी टाइम से है। तो जो ऑलरेडी काफी टाइम से है, वो तो डेफिनेटली एसआईपी मोड में कोई सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में जाके नहीं करने वाले हैं। सेम लाइक स्टॉक्स ना, तो आप क्या करते हो, पहले पहले जब आते हो मार्केट में, आप म्यूचुअल फंड में ज्यादा इन्वेस्ट करते हो, आप एसआईपी करते हो, लमसम करते हो, कुछ भी करते जाते हो उधर। फिर जब आपको पता चलता है कि वहां पे एग्जिट लोड होता है, और म्यूचुअल फंड मतलब जिस तरह से मैनेज होता है, उससे बेटर आपको लगता है कि आप फंड एलोकेशन और रिबैलेंसिंग जो है वो खुद कर सकते हो, तो फिर आप उस मतलब वे को ही फॉलो करोगे। और जो कि नोविस ट्रेडर है, उन लोगों के लिए ये फायदा है सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में जाके, ये मतलब ये जो है एंटिटी खरीदने का या फिर इसमें इन्वेस्ट करने का एसआईपी के थ्रू, कि उन लोगों को एक क्लस्टर मिल जाता है या फिर एक कैटेगरी मिल जाता है कि किस किस कैटेगरी में उस अकॉर्डिंग टू देयर रिस्क एपिटाइट के, हाई रिस्क जिसमें है तो वहां पे कुछ लगा दिया, मॉडरेट रिस्क जिसमें उसमें कुछ लगा दिया, तो उन लोगों को उतना ज्यादा दिमाग नहीं चलाना पड़ता है। बट धीरे धीरे जब वो भी सीखते जाएंगे, तो मेरे हिसाब से वो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज से मूव करके वो डायरेक्टली खुद ही अपना करना पसंद करेंगे। बट इनिशियली तो वही सही तरीका होगा उन लोगों के लिए। What about you, Sam? My thinking is like a bit different from what you said. Is like अगर आपको पता है, like if you are actively investing or trading, then you will never go for an SIP, right? Because SIP वही लोग कर रहे हैं, where they don't want to give that time or energy to their investments, but they want to get a generic return. जो भी स्टॉक में भी वही होता है कि around 12 to 15, 18% return वो expect करते हैं from index or other things, and they don't want to actively trade or invest in the market because they have some job or other things to do. So similarly, I think on crypto as well, the same difference lies here. जहाँ पे आप अगर आप एक्टिवली इन्वेस्ट या ट्रेड नहीं करना चाहते हो, डेली आपको नहीं देखना है आपके होल्डिंग्स को, then people generally do SIP. And on the centralized and non-centralized part, for a retail person, it's on the decentralized exchange, it's very costly because gas बहुत बार बहुत high हो जाता है if you are doing on Ethereum or such heavy blockchain, जहाँ पे आपका गैस फीस इतना ज्यादा हो जाता है कि हो सकता है आप 200-300 रुपया पर डे इन्वेस्ट कर रहे हो on a particular coin, but your gas fees is more than that. So अगर gas fees उतना लेवल डाउन हो जाते हैं जहाँ पे it will be very low, like 1-2 rupees या 5 rupees, I think that's better to go for a decentralized way. And अभी तक अगर लोग नहीं कर रहे हैं, that's the main reason I think, अगर gas fees उतना लग जा रहा है, so it doesn't make any sense for a retail investor to do an SIP on a decentralized exchange. मेरे हिसाब से गैस फी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि लाइक हाउ डू यू गेट नोविस पीपल ऑन बोर्ड इन द DeFi, राइट?
क्योंकि एक ही वे है वो नोविस पीपल कैन गोट ऑन बोर्डेड, दैट इज थ्रू ऑन एंड ऑफ रैम्प्स। और अगर 5-7% ज्यादा लग रहा है आपको ऑन एंड ऑफ रैम्प यूज करने में, so why would you use that? Like if you buy one USDT for 90 through a centralized exchange and you can use that to buy crypto, तो आप 5% ज्यादा देके why would you go through the effort of opening a MetaMask wallet or some other wallet and then buy USDT at 94-95 and then go and buy there? तो दैट्स अ बिग ट्रेड ऑफ, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले 1-2 बार यूज करने के बाद दे थिंक दैट दिस इज अ स्कैम, लाइक व्हाई वुड आई पे मोर मनी? सो दैट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू हैव टू कंसीडर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं कैसे ऑन एंड ऑफ रैम्प करना होता है। सो मोर ऑन दिस विल कम लेटर ऑन, बट माय थिंकिंग इज कि जैसे शौविक ने कहा है, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डू एसआईपी। वी आर ऑलरेडी एट द क्लोज ऑफ बियर मार्केट, तो बियर मार्केट खत्म होने वाला है 3-6 महीने में, मैक्सिमम 1 साल में, एंड देन बुल साइकिल आएगा। तो 1 साल में आप कितना ही एसआईपी कर लोगे? एंड फ्रॉम नाउ ऑन इफ यू आर बाइंग, हार्डली इट्स गोइंग टू मूव let's say 20-30% up or down from here. So even if you take a price point and decide to just do all in, you're still going to make more money than if you do SIP from now. But अगर आप बियर मार्केट में करते तो शायद SIP से आपको ज्यादा पैसा मिलता। तो people who are using coin sets, I think it's a very easy way to make them understand कि क्रिप्टो क्या है। पर एक और प्रॉब्लम है जो क्रिप्टो में है, जो स्टॉक्स में नहीं है, दैट इज स्टॉक्स में अगर सब स्टॉक गिरता है कोई दिन, देर आर स्टिल सम डिफेंसिव स्टॉक्स। शौविक के टर्म में आई वुड यूज दैट टर्म, डिफेंसिव स्टॉक्स। लेकिन क्रिप्टो में ऐसा कुछ नहीं है। क्रिप्टो में अगर बिटकॉइन गिरता है तो सब कुछ गिरता है, राइट? तो सेक्टोरियल डाइवर्सिफिकेशन बोल के कुछ नहीं होता है। सो इफ बिटकॉइन फॉल्स, एवरीथिंग विल फॉल। सो दैट्स अनदर थिंग कि अगर आप सोचते हो कि इफ आई डाइवर्सिफाई माई क्रिप्टो, I will defend my portfolio, but that is not the case. If you diversify crypto and if Bitcoin falls, everything falls. तो लोगों को ये समझना चाहिए कि there is no, uncorrelated crypto from Bitcoin. Stocks में ऐसा बहुत stocks है जो कि अगर पूरा market गिरता है फिर भी that stock will stay like less than 5% down or less than 2% down. But crypto में ऐसा कुछ नहीं होता है. So that is one more reason why for novice investors or novice people is always better to just invest in Bitcoin, Ethereum to begin with, क्योंकि उनको तब पता चलेगा कि like how volatile this is, and then they can think of sectorial diversification, altcoin, meme coin, Tom, Dick, Harry coin, whatever it is. तो चलिए इसके साथ let's go to the analysis of crypto movement this week and in coming weeks. December is almost there, and as you know, December में market गिरता है, so I'm hoping for a downturn in the next 1 month, maybe 1.5 months. तो सबसे पहला बात यह है कि मैं तो ये बताना चाहूँगा, बहुत बार हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया है कि दिसंबर में मार्केट गिरता है तो आप लोग थोड़ा सा संभाल के करना। अभी पता है क्रिश, ये होने वाला है, मतलब अगर हो जाता है ठीक है, अगर मान लो यहाँ से बिटकॉइन भाग के 45 के चला जाएगा ना, तो फिर हमारे व्यूअर्स हम पे चिल्लाने लगेंगे कि क्या सर, आप लोगों ने तो बोला था कि ये हो गया वो हो गया। बट वही मार्केट, आई एम नॉट टेलिंग कि मार्केट गिरता है मतलब लाइक 30, अभी कितना 37 के आसपास है, 37 से जाके एकदम लाइक 20-15 हो जाएगा या फिर 10 हो जाएगा। लाइक आई हैव बीन हियरिंग कि बिटकॉइन 10 के नीचे चला जाएगा, 12 भी जा सकता है, 8 भी जा सकता है। सो आई टोल्ड मेनी टाइम्स कि 16 के नीचे जाना बहुत डिफिकल्ट है, एंड इफ यू सी द ट्रेंड तो 16 तक जाके वो अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, क्योंकि दैट इज द कॉस्ट ऑफ माइनिंग। तो अभी जो है वो 45-46 के तक जा सकता है, बट देन ऑल्सो इट विल फॉल अगेन, बट देन अगेन इट विल राइज। तो फॉर द शॉर्ट टर्म आई थिंक कि देयर इज अ चांस दिस मार्केट विल गो डाउन इन दिसंबर, क्योंकि 2 रीजन है। एक तो है कि क्रिसमस में या फिर न्यू ईयर में वेस्ट में काफ़ी कम लोग ट्रेड करते हैं। सेम थिंग चाइनीज न्यू ईयर में, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम ऑफ 7 days ईस्ट में बहुत कम लोग ट्रेड करते हैं। तो देयर इज अ चांस ऑफ लेस वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी कम होता है तो मूवमेंट काफ़ी शार्प हो सकता है। सो इफ यू सी द होल पैटर्न, तो दिसंबर इज 1 month जहाँ पे कंसिस्टेंटली हमेशा
प्राइस एक्शन उल्टा ही होता है कंपेयर टू लेट्स से नवंबर, क्योंकि नवंबर इज लाइक सैम ने जैसे कहा था, इज लाइक October and moving up of October, November, and then December it goes down. So that is a general trend. So that's why I said. मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा हम लोग को दर्शक पे, ये वाला चार्ट जो है हम लोगों ने investing.com पे खोला है, तो एक चीज आप लोग नोटिस करोगे, ये बेसिकली BTC USDT का चार्ट है डेली, ठीक है। तो 2021 का डेटा है हम लोग के पास, वहां पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे बिटकॉइन अपना हाई से जो है ना 77% डाउन हुआ था। तो इस प्राइस पॉइंट को लिया गया है यहाँ पे, ठीक है। इसको भी आप लोग मान सकते हो, तो वही 70 के आसपास आप मान सकते हो कि उतना फॉल जो है ना वो क्रिप्टो मार्केट में बहुत नेचुरल है। तो अगर आके कोई बंदा मान लो कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है और वो आके यहाँ पे इतना बड़ा फॉल देख के सरप्राइज होकर बोलता है अरे बाप रे इतना ज्यादा फॉल आ गया, तो फिर तो मेरा तो पोर्टफोलियो पूरा ब्लो हो जाएगा। तो ये बहुत ही कॉमन सिनेरियो है। उसके बाद आप खुद देखो कि यहाँ पे हुआ क्या है। यहाँ पे जो प्राइस मूवमेंट हुआ है ना वो लगभग आप देखोगे तो लो से 140% गेन ऑलरेडी दे चुका है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह का एक चीज या फिर एक सिनेरियो देखो कि आप लोग कैसे पता करोगे कि कब बुल That's it, साइकिल bear जो है वो market. स्टार्ट हो रहा है। 140% gain in bear market. हाँ, तो मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि आप लोग कैसे पता करोगे कि बियर मार्केट का अंत हो चुका है या फिर एंड जो है वो काफी नियर है। आप लोग इस तरह का डेटा जब देख रहे हो ना कि हाई से लगभग आपका 70% फॉल हो रहा है, उसके बाद ये लगभग आप मान सकते हो कि 150% गेन दे रहा है। मतलब आप ये मान के चलो कि इसका जो लो था ये लो हार्डली ही टूटेगा, जो क्रिश अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस कर रहा था। इस टाइप का सिनेरियो आप कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो इसको, ठीक है। टॉप से लेके बॉटम तक किसी भी जगह पे आप ड्रॉ कर सकते हो। इस टाइप का गेन जब भी आपको दिखता है तो आप श्योर हो जाओ कि उसका जो लो बना हुआ है वो हार्डली बहुत मुश्किल से वो टूटेगा। ये तो क्रिश तो फिर भी चलो बहुत एक्सट्रीम केस में ही बता दिए कि 16,000 17,000 ये बहुत ही एक्सट्रीम केस हम लोग कंसिडर कर रहे हैं या फिर बोल रहे हैं। यूजुअली यहाँ पे होने का जो चांस है मुझे जहां तक लग रहा है, ये जो जोन है ना, ये वाला जोन जो एक्यूमुलेशन जोन आप लोग देख सकते हो, इसका जो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस ब्रेक करके बीटीसी ऊपर गया था, ये लगभग है आपका 30 to 1,000, ठीक है। तो यहाँ तक एक बार आ सकता है घूम के नियर टर्म में हम लोग अगर बोले तो, ठीक है, लॉन्ग टर्म में नहीं। यहाँ पे आने के बाद ये आप लोग थोड़ा सा इसको मॉनिटर करना क्लोजली कि एक बार ना स्टॉप लॉस हंटिंग यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा रिटेलर्स को या फिर बहुत सारे बंदे को या फिर बहुत इंस्टीट्यूशंस को भी ये पता रहता है कि कहाँ कहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा मिलता है, किस प्राइस पॉइंट पे जाके, तो वो स्टॉप लॉस हंटिंग होता है। तो हो सकता है एक बड़ा सा वीक बनाए इस प्राइस पॉइंट पे आके नीचे की तरफ, फिर वो अपना रेगुलर जो मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ धीरे धीरे स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखोगे। और यहाँ पे सिनेरियो क्या बन रहा है मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। याद है हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था पोल एंड फ्लैग पैटर्न। तो पोल एंड फ्लैग का जो ये देखो, आप लोग इसको अगर इस तरह से फॉलो करते हो ना तो यहाँ पे दो लाइन आप लोग इस तरह से बना सकते हो, राइट। इसको थोड़ा सा ऊपर करके, सॉरी, हाँ। तो ये जो है ना ये आपका चैनल है, ठीक है। और नीचे भी इस तरह से आप लोग एक पैरेलल चैनल इधर बना सकते हो। तो ये लोअर चैनल है, जब ये लोअर चैनल नीचे टूट जाएगा, मैं एक्चुअली बना के दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो जब तक शौविक राइट, अपना चैनल्स बना रहे हैं, आई वुड लाइक टू से कि almost bear market is coming to close, and the reason is कि 2024 अप्रैल एंड में हाफिंग है, और अभी जो बिटकॉइन का माइनिंग प्राइस है दैट इज लाइक 16,000 17,000 18,000 डिपेंडिंग ऑन विच कंट्री यू आर इन, बट ये हाफिंग के बाद प्राइस विल बी लाइक 36 to 40K। तो उसके नीचे तो प्राइस नहीं रहेगा। सो इफ यू आर कंसिडरिंग नाउ द प्राइस इज ऑलमोस्ट एट दैट प्राइस, एंड एट दैट प्राइस। और यहाँ पे अगर क्रिश हो क्या रहा है ना, यहाँ पे बहुत टाइम ये बिता रहा है। तो एग्जैक्टली किसी एक प्राइस पॉइंट पे जाके अगर So it's किसी एक almost प्राइस पॉइंट पे आके अगर कुछ कोई एक आप लोग बता दीजिए, अब दोनों एक साथ बता दें तो
I think we both are very excited at this. इसीलिए like he is from a technical side, so I will talk about more from non-technical side. तो जैसे लूना क्रैश हुआ, for that Celsius हुआ, FTX हुआ. So FTX was like the worst, right? तो FTX crash जो हुआ, that was almost at this price probably around 38. And sorry, लूना क्रैश जो हुआ around 38 के आसपास हुआ. तो we are at a stage कि जहाँ पे the worst is already over and the price is already moving close to that and above that. तो यहाँ से इससे ज्यादा खराब और कुछ नहीं हो सकता, like unless BNB goes down or unless Tether goes down. So those are like Armageddon like situation, जो कि काफी difficult है होना, या फिर Ether goes down. So that's why I'm excited कि the worst is over. And Shobik is excited because of his chart pattern, which I think he is going to show soon. So Shobik, up to you. हाँ, तो यहाँ पे आप लोग देखो, ट्रेडर के लिए ये है ना कि इस चैनल को जो है नीचे से आप लोग बाय करो, ऊपर से सेल करो, लेकिन जब भी ये चैनल ब्रेक करके नीचे की तरफ आएगा ना, तो आप लोग एक नीचे की साइड में आप लोग देख सकते हो इसको, ठीक है। उस साइड में कंसिडर करके आप लोग पोजिशंस बना सकते हो, और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो चैनल की जहाँ पे जहाँ पे ब्रेक कर रहा है चैनल को, उसके ऊपर आप लोग 1-2% मान के चलो, वो आप लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग प्लानिंग बना के सेफली ट्रेड कर सकते हो। तो ये हो गया BTC का। इथेरियम का भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। ये भी उसी तरह का लगभग चैनल बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज नोटिस करो, ये जो जोन है ना, इस जोन में वापस आके बार बार ये टच कर रहा है, ठीक है। तो ये एक कहावत है मार्केट में, आप ये मान सकते हो कि इट एक्ट्स लाइक ए डोर, ठीक है। तो आप जितना बार दरवाजा को धक्का दोगे उतना वो वीक बनता जाएगा, और इसको अगर बार बार आप मतलब धक्का दे रहे हो, पुश कर रहे हो, तो फिर एक पॉइंट पे जाके ये ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक जब होता है ना, तब तुरंत बहुत फास्ट मूवमेंट होता है ऊपर की तरफ। आप लोग ये भी ध्यान में रख के थोड़ा सा इथेरियम में भी पोजीशंस वगैरह बना सकते हो, ठीक है। तो ये BTC और इथेरियम का हो गया। और आप लोग यहाँ से थोड़ा सा मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहूंगा कि बहुत सारे इथेरियम BTC का तो हो गया, लेकिन एक कॉइन जो है जो सबके दिमाग में हमेशा रहता है वो है सोलाना। तो अगर आप देखते हो तो सोलाना हैज ऑलरेडी गिवन अ 6x ग्रोथ, व्हिच इज लाइक 600% ग्रोथ, राइट। $10 के आसपास चला गया था, $9-10, अभी वो $60 के आसपास है। व्हाट डू यू थिंक, दिस कॉइन इज गोइंग टू ब्रेक इट्स प्रीवियस ऑल टाइम हाई, या फिर इट विल लूज इट्स स्टीम? आपको क्या लगता है? जनरली वी हैव सीन यहाँ पे कुछ फंडामेंटल का इशू आ जाता है, ठीक है। हर चीज जो है ना टेक्निकल के बेसिस पे नहीं होता है, कुछ चीज फंडामेंटल के बेसिस पे होता है। तो आप लोगों को सोलाना का वो चीज ध्यान में रखते हुए, अभी तो प्राइस मूवमेंट फिलहाल दे रहा है, लेकिन सोलाना का जो ऑल टाइम हाई था, क्रिश आई थिंक प्राइस में एक्चुअली ट्रैक नहीं किया, आई थिंक उसका जो ऑल टाइम हाई था वो मेनली था सिर्फ एक ही ऐप के कारण, स्टेपन। तो स्टेपन ऐप काफी फेमस हुआ था, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट रीच ऑल टाइम हाई। तो सोलाना में अभी भी बहुत सारे ऐसे ऐप्स है जो कि बिल्ड हो रहे हैं, एंड प्रोबेबली दे विल बी लॉन्च। सोशल फाई में बहुत सारे ऐप्स है, डेक्स में बहुत सारे ऐप है। ऑफ कोर्स देयर आर आल्सो सम ऐप्स जैसे रेडियम व्हिच हैज अ लॉट ऑफ टोकन्स व्हिच इज लॉक्ड विद FTX। तो आई थिंक सोलाना हैज अ ब्राइट फ्यूचर। लाइक अगर आप मेरे बारे में बोल रहे हो, लाइक आई पर्सनली थिंक सोलाना इज स्टिल समथिंग व्हिच कैन बाउंस बैक। उसमें पता है क्रिश, मुझे ये लगता है कि नंबर ऑफ वैलिडेटर्स जो है ना, वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है सोलाना के लिए। तो उसमें अगर थोड़ा सा सुधार आता है तो फिर नंबर ऑफ वैलिडेटर्स, इट्स स्टिल बेटर देन सम चेन्स जहां पे 12 वैलिडेटर है या 20 वैलिडेटर है। मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, बट देयर आर मल्टीपल चेन्स जहां पे मतलब देयर आर लेयर 2 जहां पे 5 वैलिडेटर्स भी है, एंड दोस आर मेकिंग बिग न्यूज़। सो वैलिडेशन के ऊपर decentralization and all these but things. if you are competing with Ethereum and you are claiming that you are next Ethereum killer, then at least try to improve certain areas, right? अभी मेरे को लगता है they are going to improve, क्योंकि like everybody has more or less agreed कि Ethereum killer बोल के तो कुछ नहीं हो सकता। So basically there will be like specific chains for specific apps. तो गेमीफाई के लिए एक हो गया, फाइनेंस के लिए एक हो गया, सोशल फाई के लिए एक हो गया, सिक्योरिटी के लिए एक हो गया।
So there will be like this concept of layer 1, layer 2, layer 3. Moving forward, I think layer 3 or composable blockchains will make a big news. So that's my personal thinking. So moving forward, some of my thinking and some of my ideas are still uh, yet to be tested. But अगर आप सोचते हो तो there are some ideas which was there 6 months back is already being proven to be correct. जैसे मैंने 6 महीने पहले कहा था कि centralized exchanges and centralized platform से बहुत ज़्यादा हिट आने वाला है, and that will happen within 1 year, and that is happening. दूसरा चीज़ मैंने कहा था कि बहुत सारे decentralized chains, decentralized wallets, they will start working with centralized on and off ramps. That is also happening. So multiple wallets are started working with on and off ramps. तीसरा चीज जो मैंने कहा था कि अगर आप एक चेन से दूसरे चेन में मूव कर रहे हो and if that chain does not have native USDT USDC minting, that chain is going to suffer. So all these things are happening and a lot of things are still to be done. तो मैंने फोर्थ चीज कहा था कि प्रेडिक्शन वाइज की बहुत सारे ऐसे ऐसे टूल्स है या फिर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर है जो अभी बने नहीं है, जिनके कारण डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस उतने अच्छे नहीं है. सो वन ऑफ देम बीइंग ब्रिजेस. You will see a lot of money being poured into bridges. So that is also happening. So going to the next news, I think Sam, you can show it. So this is Maxis कहूँ. Sure. कह सकता हूँ Maxis. आपका कुछ प्रेडिक्शन है? सैम आपको क्या लगता है? नहीं डेफिनेटली. सैम आपको क्या लगता है कि क्रिस कब कहेंगे कि इंडिया में क्रिप्टो बिल आने वाला है? मैं 2026 से पहले तो नहीं, क्योंकि 2000 नहीं, आई मीन इट्स ऑब्वियस राइट, क्योंकि 2024 में इलेक्शंस है. इलेक्शंस खत्म होते ही गवर्नमेंट विल स्टार्ट लुकिंग इनटू मेजर प्रॉब्लम्स which is around GST, which is around taxation, which is around distribution of revenue, etc., and also some election promises. तो 2024 तो कुछ नहीं होने वाला, 2025 में भी शायद कुछ हो, but 2026 में definitely I'm expecting India will rock the world with its bills, with its rules and regulations, etc., because India has one of the most advanced fintechs anywhere in the world. Like UPI is a technology which is not available anywhere in the world. Like Brazil we are proud of that. Brazil के पास Pix है, which is close to UPI, but India has very strong fintech. India has very strong KYC rules. India has very strong India stack. So adding crypto regulations under the same law, same rules is not a very difficult thing. But it's just that the government के पास इससे ज़्यादा pressing needs है and pressing problems है. So government is going to focus on those problems first. तो मेरे हिसाब से मैं तो अभी प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली 2026 के पहले कुछ नहीं होने वाला, और अगर उसके पहले कुछ होता है, इट मींस क्रिप्टो इज रियली ऑन द गवर्नमेंट्स रेडार, व्हिच इज आल्सो अ गुड थिंग, बिकॉज देन इंडिया गेट्स टू गेट अ सीट एट द फोरफ्रंट ऑफ क्रिप्टो रेवोल्यूशन. तो जैसे मैं कह रहा था कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होंगे एंड दे विल स्टार्ट रेजिंग फंड. तो रॉकेट एक्स हैज स्टार्टेड its multi-chain sex and dex aggregator, जहाँ पे आप you can move assets between hundreds of blockchain using one API. So basically you can use this API to connect with wallets and dApps and dexes from your centralized or decentralized application, and if it is connected, then you get to choose multiple dexes and sexes to trade with. That's it. So this is one application which will make things easier, but this is more like a honeypot. कि आपको पता है if you break this, you get a very big reward because it is holding a lot of assets. Moving forward, DYDX, which is another decentralized exchange, they are going to start paying traders rewards from their governance tokens. So this possibly makes them a security token in some respect because they are sharing rewards with their traders. But we will see how the US SEC reacts to this. But जैसे मैंने कहा था, DYDX is going to lose its prominence once they move away from Starknet and build their own chain, क्योंकि USDC is still not natively minted. On a positive side, USDC has also launched their own multi-chain USDC minting and burning. So if they integrate with
Atom, on which DYDX is built, Cosmos SDK. So I think DYDX has still a chance to do much better in the future. But attracting users from Ethereum layer 1, layer 2 to a new chain is very difficult. Similarly, if you see DeFi platform CoinChain raises 10 million in funding. So the whole narrative is again coming back. So IOTA is launching their 100 million Abu Dhabi fund in Middle East for expansion. So बहुतों को पता नहीं होगा, IOTA is a very old, coin, which does not work on blockchain technology exactly, but works on DAG, which is similar to which is digital, which is decentralized ledger technology, but not blockchain. So they are launching their own funds for working with regulators and seeing that how people can use them. So, and finally, Wormhole raises 225 million at 2.5 billion valuation, which is crazy. Kyunki, if you consider, this is something which people have been trying for a long time. चाहे वो EPNS हो, later on which become push protocol, चाहे वो wormhole हो, there are multiple such concepts which have raised funds, but we have yet to see something which is actually going cross-chain. So this is something which I feel can solve, not feel, but I think this is something which can solve a lot of problems, especially moving assets. Because the first thing you do is after you move assets, you have to let the other blockchain know that what has been moved and what is the current status. So that is a basic. So यही चीज वो करना चाहता है, and yeah, raising $225 million is great, but we have seen projects which have raised billions go down in crypto. So still skeptical how useful it will be, but let's hope this makes some progress. So last जो आपने कुछ news देखे, all of them are based on infrastructure companies in DeFi space or infrastructure or DeFi companies raising funds. And that is something which I predicted कि जब centralized exchanges पे ज़्यादा heat आएगा, a lot of funding will not go to centralized space but into DeFi space. But that is exactly the time when you should build in centralized space, मेरे हिसाब से. Why? Because now you will not get crazy valuations. People are not going to build in centralized space because there is problems in the government's regulations and laws, etc. But if you build now, when nobody is building, you have a very big advantage, because when everybody starts building, you will be much ahead than them. तो यही चीज 2014 में if you consider ZEP पे सबसे आगे था, and they were the biggest. So when 2016-17 इंडिया में क्रिप्टो का buy sell बढ़ा, exchange trading बढ़ा, etc. volumes बढ़ा, then ZEP was the numero uno. Same thing WazirX. They started building in 2018, 2017, 18, 19, जबकि बैन था इंडिया में क्रिप्टो ट्रेड करना, not ban था but INR on and off ramp ban था. So they started building at that point, and जब भी गवर्नमेंट ने उसको उठाया, WazirX made a huge profit. तो जो भी founders थे, they exited quite well. Same thing CoinDCX. So CoinDCX is now, and also I would say CoinSwitch Kubernetes is building in this market when nobody is doing anything. So when the government comes up with laws and regulations, they are going to be at the forefront. But at this point, raising money for centralized exchanges, centralized platform is going to be crazy difficult. And that's why DeFi is going to boom. But end में क्या होता है कि you cannot put your INR into DeFi. You cannot put your hard cash into DeFi or government currency into DeFi. You still have to go through an on and off ramp. You still have to go through an exchange. You still have to go through P2P. So at the end of the day, volumes are going to come. It's just that you have to survive that period as a centralized exchange. So with this, I think we're almost at the close. Any comments, any predictions, anything from your end, so we can Sam? You're muted. You're muted. Sorry. I think मुझे हम लोग को हमारे viewers और
जो हम लोग को देख रहे हैं उन लोग के पास से कमेंट्स हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, तो उन लोगों का अगर कुछ डाउट्स वगैरह होगा तो डेफिनेटली हम लोग उसको रीच आउट करेंगे और अच्छे तरीके से ताकि उन लोग को हेल्प भी हो जाए. लेट्स सी. I think coming back to this point, other than centralization, I think अभी on the user side we don't get much traction जितना हम लोग बुलरन में देखते हैं कि people coming in, joining spaces. Similarly, जैसे आप बोले centralized exchange में अभी उतना कोई build नहीं कर रहा है. So I think now also people are not giving such this type of live sessions and ऐसे AMAs where they are discussing, because this is not the time where they can monetize it well. So as the bull runs comes, we'll see more of मोनेटाइजेशन के आइडिया से हम लोगों ने ये पॉडकास्ट तो स्टार्ट नहीं किया था. सो आई स्टार्टेड बेसिकली दिस पॉडकास्ट टू हैव अ डिस्कशन अमंग्स पीपल हु आर both from India and also from trading aspect, and me being from outside and coming to India, seeing what I am seeing. So I feel that there is a gap in explaining the right way the news. क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉडकास्टर्स हैं, ऐसे पीपल हैं who are big in the crypto space, but you can still pay them money to say your tune or sing to your tune, right? So that's not something which I want to do. So doing this podcast is just to give you the right knowledge. At the end of the day, you still make your own decisions, and telling you what is going to be the view in the market in 6 months time. So that is the objective. And why I am so bullish still on centralized spaces, 99% people don't know how to send their INR using UPI to MetaMask because they don't know how to use MetaMask. वो अभी भी CoinDCX and CoinSwitch and all these other exchanges पे depend करते हैं, right? So इंडिया में अभी भी बहुत स्कोप ऐसा है कि जब आपका ये 10-fold ग्रोथ हो सकता है. So if you consider in stocks, the biggest one, Zerodha, has started building in 2008-9. 2016, 17, 18 में जाके उनको बहुत ट्रैक्शन मिला because of their consistent building over time, and they did not give it up. But उसके बाद अगर आप देखते हो तो there are multiple such platforms like Upstocks, Grow, etc., which are standing on top of Zerodha's achievements and trying to innovate that space. I think that is where we are at in crypto. पहला revolution, and following that everything is done. जो भी पहले exchanges थे या अभी भी जो exchanges है इंडिया में, most of them are just using Binance API and building a front end on top of it. They are depositing some money in some centralized exchanges, which is probably Binance or some other exchanges, and they are mirroring whoever is buying Indian rupees, whoever is buying and selling with Indian rupees. That's what they are doing. So innovation बोल के ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे. So that is something which is going to drive the next stage. Ki how do you innovate? How do you make things simple for people to invest, right? Rather than trading. So that is the focus. That's what I think. And with this thing, I will not talk more. Definitely, I'm going to talk a few more minutes, which is to have a soft launch of our centralized non-custodial crypto swap, which is basically a kind of on and off with XREX. Your voice is cracking. Shavi, can you hear me? Same for me. Your voice is cracking, Krish. Okay. I think some network issue again at the 11th hour. Yeah, now it's better, I think. No, we can't hear you. No. Please turn off the video, I suppose, and then try it out. It's not an issue. I think I yeah. can hear you well. Now it's correct. Now it's fine. Anyways, I think video is not an issue. तो मैं जो कह रहा था कि I will still take a couple of minutes of your time to say what we are doing. तो अभी जैसे आपको पता है, we were building something in the centralized non-custodial space. So we have launched our soft launch or beta launch, whatever you can say, with XREX. So XREX is a fully compliant regulated exchange back in Taiwan. They also got their MPI license in Singapore.
that license is only available to like 22 companies in Singapore. So Extra's got one of them. So we have registered as a proper VDA under the PMLA, and we started on and off ramp with XREX and as a OTC desk. अभी जो हम लोग कर रहे हैं, we are trying to expand the education space as well, trying to educate more people, but that's what we are looking into. So I don't want to focus a lot on the trading aspect, because I feel कि बहुतों को पता ही नहीं है कि what they are trading. So why should I even focus on that? I think there's more value in asking people to invest a certain part of their wealth into crypto and get an exposure. So that's why I have used a centralized exchange with regulations and proper controls, etc., as our custodian partner and also our SaaS partner. And we in turn are going to work as INR to crypto, crypto to INR, and also for OTC space. So that's what we have building. आगे जाके plan ये है कि we expand this platform and we add more things like staking, maybe NFT trading, etc. But all from non-custodial point of view. So we are not taking custody of your asset. You are free to choose whatever you want to choose. Like if you want to move your money from a centralized platform to a decentralized platform, you are free to do that. So that's in nutshell what we are doing. And now I think I'm cracking again. Anyways, let's pass the mic to Sam and Sovik. Unfortunately, I have some internet issues. Hope to continue next time. Thanks, Krish, for giving us the idea about like what we are building, and yeah, I hope that people start using the swap. So it's still in the beta stage, so we can't have a full-fledged launch right now. So if you are willing to try it out or give us feedback on it, just leave us a comment and we'll tell you the steps to how you can access it and how you can become one of the first users of the swap, and give us feedbacks and test out the platform yourself. Shavik, anything from your side? No, I think people can update their the people who are already using XREX app. They can update their app from the Play Store. I suppose they are yet to get the notification of the latest updates, but very soon they'll get it. But otherwise, they can update it from the Play Store, and they can take a look on the features that we have installed over there in A2Z Crypto Swap. So they can try it out, and they can let us know about the feedbacks and if they are facing any issue, and if they are not even able to understand anything related to the swap, they can directly text us or in our Telegram group. So yeah, I think that is it from our side for this week, and by next week I think we'll all I am traveling, and Krish is also traveling to East India for the East India Hackathon and all the side events. So if you are visiting some of our listeners, you can also join us and have a chat on the event. So thank you guys for watching in, and whoever is watching it afterwards. And do make sure you follow, subscribe all the channels. And we'd like to know more about like what you want us to cover in this kind of episodes and get your live feedback. So if possible, to try to attend all these live sessions, and do put in your comments or questions so that we can understand you better and give you better solutions. So thank you, everyone. I think that's it for this week. See you next week. Have a great Thank weekend. you. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.